friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो लॉ से रिलेटेड टॉपिक है जो एनआई एक्ट के बारे में आज आपको डील करें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डील कर रहे हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और लिमिटेशन दोनों को मिक्सअप करके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार किए हैं। उसका आंसर भी आपको वन बाय वन बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू रिबट द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 130 ऑफ एंड 118 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्यूज्ड। इसका आंसर है मे रिबट द प्रिजम्पशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोंडरेंस। दूसरा क्वेश्चन आ गया, अंडर सेक्शन 143 ऑफ एनआई एक्ट 1881 द ट्रायल शैल बी मेड द कंक्लूड आफ्टर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट विद इन डैश पीरियड। किस पीरियड में वो कंप्लेंट फाइलिंग कर सकते हैं? तो 6 मंथ पीरियड होगा इसका आंसर। तीसरा पॉइंट आता है, अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to, to the order of certain person to the waiver of the instrument is a। इसका आंसर होगा प्रोमिजरी नोट। ऑफेंस अंडर एनआई एक्ट आर ट्राइबल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऑफेंस अंडर एनआई एक्ट आर ट्राइबल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा यह ट्राइबल होता है। द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट कैन बी टेकन द जेएमएफसी हैविंग टेरिटोरियल जुडिक्शन एट द। इसका आंसर होगा प्लेस वेयर चेक इज डिजोनर बाय द बैंक इन विच इट इज द ड्रॉन। विच सेक्शंस प्रोवाइड दैट द ऑफेंस, उस ऑफेंस के कौन सा सेक्शन प्रोवाइड अंडर एनआई एक्ट कंपाउंडेबल, जो कंपाउंडेबल है। सेक्शन 147 में एनआई एक्ट कंपाउंडेबल के अंतर्गत रखा जाता है। सेक्शन 147 अंडर एनआई एक्ट हाउ मेनी डेज आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड ऑन ड्रोवर। ड्रोवर को डिमांड के लिए सर्विस ऑफ नोटिस द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज अगेंस्ट ड्रोवर, और ड्रोवर के अगेंस्ट में जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ इफ ही फॉल्स टू मेक पेमेंट, और पेमेंट के लिए वो फॉल्स है, कितना दिन होगा? 15 डेज उसको टाइम दिया जाता है। व्हाट इज द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? इसका आंसर है डेट द चेक वाज इशू फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी डेब्ट या लायबिलिटी। कोई भी बकाया हुआ या कोई भी लायबिलिटी जो है उस चेक को डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है। सेक्शन 139 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन विच कैन बी इम्पोज अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई ट्वाइस द चेक अमाउंट। अंडर एनआई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हाउ मेनी टाइम्स ए होल्डर ऑफ चेक कैन प्रेजेंट इट बिफोर ए बैंक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी? एनी नंबर ऑफ टाइम। उसके बाद आइए एनआई एक्ट के एक पॉइंट्स को और भी डील कर रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनआई एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। काउंटर क्लेम ये हर एक बार जुडिशरी में पूछा जाता है। काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द सेम डेट ऑन विच द counter claim is made in court. Section 31 of the Limitation Act provides provision as bare or pending suit etc. Any suit for which no period of limitation is provided elsewhere in the schedule of the Act, the limitation would be 3 years. Section 3 of Limitation Act provide bar of limitation. Period of limitation means period of limitation prescribed for any suit. Period of limitation prescribed for any appeal application by suit.
according to the provision of limitation, both A and B, hundi or check. According to Limitation Act 1963, definition of bond has been given under Section 2D. As per the provision of Limitation Act 1963, legal disability are insanity or minority. Section 9 of Limitation Act talks about continuous running of time. Section 12 of the Limitation Act 1966 provides exclusion of time in legal proceeding. Section 60 of the Limitation Act 1963 apply to which one of the following is the exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction. Section 70. A wrong statement. Law of limitation is lex loci. Law of limitation is को हम lex loci भी कहते हैं. Effect of acknowledgement in writing is given under section 18. आंसर होगा under section 18. Section 22 of Limitation Act refer to case of continuing breach of contract. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही यदि कोई कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट में बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया उसे कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. सेक्शन 20 लिमिटेशन ऑफ केस. विच वन ऑफ द फ्लाइंग इनकरेक्ट amendment of certain act. Section 24. Which of the following section provides expiry of prescribed period when court is closed? Section 4. What will be what will be the limitation period for enforcing the payment of secured secured by a mortgage or otherwise charged upon immovable property? 12 years. Section 8 of Limitation Act provides special special exception. According to the provision of Limitation Act, appeal against decree can be filed in High Court 90 days. Law and granted by state government. Law was granted by state government by way of allotment with the limitation of enjoyment of for 15 years transfer. Did not involve the absolute ownership of land. Period limitation of claim adverse position in such case would be 30 years. 30 years. Under Limitation Act, the period of the limitation of any suit application shall be deemed to be extended for the maximum period of from the death of the person affected by disability 3 years. Under Section 21 of Limitation Act 1963, when the suit shall be deemed to have been instituted as against the newly impleaded defendant, the date on which has was impleaded. That is which was impleaded. Under Limitation Act 1963 is computing the period of limitations for any suit. The day for which such period to be reckoned shall be excluded. Under Limitation Act 1963, the prescribed period of limitation for suit for compensation for a malicious prosecution is 1 year. Acknowledgement made after the period of limitation is of no effect. The period for limitation for filing defamation suit is 1 year. Definition is manani, where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed. The suit, appeal, application may be instituted, preferred made on the day when court reopens. Nothing in the Limitation Act shall affect Section 25 of Indian Contract Act. The time requisite under Section 12 Clause 2 of Limitation Act means actual time taken. Actual time take. How many times has the preamble of Constitution of India been amended so far? Once. एक बार. Answer होगा once. When and by which amendment were the fundamental duty including in the Constitution? इसका आंसर 1976 42nd Amendment. When Commonwealth Games commenced 1930 Hamilton. Through which of the following bank RBI helped finance Indian foreign trade? IDBI. Raj Manar Committee was concerned center-state relation. Lifetime of human body is carbohydrates.
Which of the following state has very tile? MP. There were four council in Buddhism. At which place was the fourth council held? Kudan Kulam. Which of the following deity is mostly described in Rig Veda? Indra. If there were no atmosphere was, what would be color of sky? Black. If you smuggle goods in the country, those may be by the custom confiscated. A person who has committed such an abominable, I think I have got a cold, can stop sneezing. Synonyms of stubborn is all of the above. Obstinate, mullish, and dogged. Antonyms of noble, ignoble, and survival. Arrangement of date in predetermined a sequence is called sorting. Result obtaining in computer is called output. Where is RAM located? Motherboard. Where are saved files stored in computer? Hard disk. Which is the secondary storage device? Secondary storage device, hard disk. Secondary storage device is the hard disk. Under Section 27, Evidence Act discovery of fact include the object found and the place for where is produced. Under Section 111A of the Indian Act 1872, when a person is accused of having committed offence against the state and his presence is shown in the area where the offence was committed, the court shall presume, when unless contrary shown that had committed the offence. Shall presume का मतलब होता है कि निश्चित ही इसको प्रिज्यूम किया जाएगा. मे प्रिज्यूम में उसे टाला भी जा सकता है, लेकिन सेल प्रिज्यूम में उसको करना ही करना. अंडर प्रोवाइजो 4 of Section 92 of Evidence Act, oral evidence is admissible in case where the contract has been written voluntary and not required by law to so written. Things said to done by the conspirator in reference to the common design in relevant under Section 10 of Evidence Act. To answer of the court questions, the adverse party has the right to cross-examination only permission of the court. Transaction of instance relating to right to custom are relevant under Section 30 of Evidence Act. The want or failure of consideration on contemplate under proviso 1 to Section 92 Evidence Act invalidating a document. इसका आंसर का is a complete want or failure. The res intra alia acta is receivable under Section 46 Evidence Act. The position contemplated under Section 110 of Evidence Act is actual physical position. The presumption under Section 90 of Evidence Act can be drawn in respect of original document. The question is whether A robbed B. The fact that after B was robbed C said in A presence, the police are coming to look for the man who robbed B, and that immediately after once A ran away are relevant fact under means like their fact relevant is they constitute. सी कंडक्ट. अगले वीडियो में हम आपको एविडेंस के एक्ट के बारे में या और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. आज का वीडियो यहीं पर वाइप आउट करें. डेट्स ऑल.